and welcome to today's webinar. For those of you who have just joining us or have joined, a very warm welcome. Just for your information, a recorded version of this webinar will be available. Going forward, I would like to introduce our expert psychologist, Miss Yashita Khera. Yashita Khera is a counseling psychologist and a mental health advocate holding a specialized skills in de-addiction recovery. She holds a master's degree in clinical psychology, and she has also practiced a therapy work by utilizing the principles of cognitive behavior therapy. She has been practicing techniques like art therapies, counseling skills, therapy skills, and positive psychology interventions, and holding an experience in working with both children and adults. So now we are covering a topic on understanding addiction. Yashita, you can start now. Hi everyone, am I audible? Someone please just confirm if I'm audible or not. And if I'm not, just let me know. Other than Yes, that, yes. Okay, yeah. So moving on to today's topic. The first topic in our entire, webinar would be understanding addiction. So we'll be focusing how addiction affects family members. We know that जो है एडिक्शन में है, जो यूजिंग में है, या फिर जो सफर कर रहा है वो ऑलरेडी सफर कर रहा है, बट जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती वो ये है कि फैमिली कैसे सफर कर रही है. So in today's webinar we'll be discussing that, because I'm sure if not today or if not tomorrow, we can anyway help someone. हमें नहीं पता कौन कब सफर कर रहा है किस चीज से. We can be more empathetic towards them because we'll be aware. Okay, so starting with today's topic, that would be understanding addiction and how it affects family members. Before starting, I would request you all to take a minute, close your eyes, and think about a pink elephant. Just close your eyes and focus on thinking about a pink elephant. Now, I'm pretty sure you all must be wondering, पिंक एलिफेंट कैसा होता है, बट स्टिल हमने अपने ब्रेन में एक पिक्चर बना ली होगी पिंक एलिफेंट की, राइट? नाउ आई वुड लाइक यू टू क्लोज योर आईज अगेन, एंड दिस टाइम डू नॉट थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट. Think about anything, but do not think about pink colored elephant. The elephant should not have a pink colored trunk, pink colored legs, or a pink colored body, nor a pink colored tail. Anything but not a pink elephant. You can think about anything, any elephant, but not a pink elephant. Now, as I keep saying, do not think about pink elephant, do not think about pink elephant, I'm pretty sure you all must have thought about it. The more you've tried to उसके बारे में नहीं सोचना, हमने उसी के बारे में सोचा होगा. Am I right? So that is how our brain functions. When we say कि यार नशा मत करो, and we see the person is still, using it. The person is still doing nasha. So this is how a brain of an addict works. The more you tell them no, the more they'll do it. The no word in their brain does not register. It's not about their brain only. We as a human, this is a fact that we as a human do not register the word no. Even when we are younger and we tell us that ये नहीं करना है, our brain is more focused on doing that thing, particular thing. We all have experienced that. हमें जिस चीज के लिए मना किया जाता था, हमें वो चीज ही करनी है. Now the question is, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि जो चीज हमें मना करी जा रही है, जिसके रिस्क बहुत सारे हैं, जिस consequences हैं, हमें वही करना है. If you're being told, for example, let's take a very small example that जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इन फ्रेंड्स से बात नहीं करनी है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है. Our brain ignores the word no, and it makes us more curious to do that thing. And the same thing goes with addiction. So as a society, we all are aware कि addiction को एक taboo माना जाता है कि भाई जो है addict है उसको भी shame किया जाता है, उनको guilty दिया जाता है.
तो ऐसा इसलिए भी है बिकॉज जो भी चीज प्रोहिबिटेड होती है ना, जो भी चीज अंडर कवर्ड होती है और जो भी चीज हमें मना की जाती है, as a human, and human nature, we are more inclined towards that. So now moving forward, I would also like you to ask, and I would really appreciate if you all engaged. I would like you to ask ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमने एडिक्शन के बारे में बाहर सुनी, जो हमने सुनी है या फिर हमने देखी है या फिर हमने मूवीज में देखी है. स्टार्टिंग विद फॉर एग्जांपल वी कैन से जो लोग नशा करते हैं वो लोग बुरे होते हैं. We also use different terms to address them: nashedi, nashebaz, chursi, and all these things. So I would really appreciate if someone would volunteer and tell me कि हमने ऐसी और क्या क्या चीजें सुनी है नशे को लेके और नशा मुक्ति केंद्र डी एडिक्शन सेंटर्स को लेके. जस्ट ग्रोइंग अप मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है. Anyone would like to volunteer? नो प्रॉब्लम. सो हम जैसे बोलते हैं कि ये नशेबाज है, नशेड़ी है, हम ऐसे टर्म्स देते हैं. हम उनका कैरेक्टर भी हम जज करते हैं कि भाई बुरे लोग हैं, उनका कैरेक्टर ही खराब है. या फिर और हमने मिसकंसेप्शन ये पाले हुए हैं कि नशा मुक्ति केंद्र गए तो मतलब एकदम ही गॉन केस हो. नशा मुक्ति केंद्र में मारते हैं, पीटते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ग्रू अप लिसनिंग टू दैट एंड दैट वाज माय बिलीफ एज वेल कि ऐसा ही होता है. जो लोग नशा कर रहे हैं वो गलत है, नशा करना गलत है. अगर वो नशा नहीं छोड़ रहे तो मतलब वो जान के नहीं छोड़ रहे, उनके में ही कैरेक्टर प्रॉब्लम है, कोई कैरेक्टर डिफेक्ट है. वो चोरी करते हैं, वो मारते पीटते हैं, दे शुड बी पुट इन जेल. एंड also one more thing that I kept believing for longest period of my life is कि नशे का कोई इलाज नहीं है. To all the families and people who are here, who are suffering from addiction or who know someone who is suffering from drug addiction, please make sure that these are all the myths. Addiction is a disease. When I say understanding addiction, I mean to say addiction is a disease. And when I say disease, I mean to say there is something in our brain that goes in. कुछ तो वहाँ पे भी चलता है जिसकी वजह से बीमारी बन जाती है. वी हैव सिम्टम्स फॉर फीवर कि अगर फीवर हो रहा है तो ऐसे वीक वीक लगेगा, बॉडी गर्म हो जाएगी, वीकनेस फील होगी, सिर में दर्द होगा, गला खराब हो जाएगा. बट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम एक इंसान को देख रहे हैं कि भाई वो चोरी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो आइसोलेटेड है, वो बार बार पे चिढ़ रहा है, वो अपने आप को बस मौके ढूंढ रहा है पीने के, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन और ये उसके सिम्टम्स. Remember that person is not the problem, they have a problem, and most of the time they don't realize कि कोई problem है. और वही चीज हम अपने ट्रीटमेंट में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं. दैट फर्स्ट वी मेक अस देम रियलाइज कि कुछ तो प्रॉब्लम है. क्या है वी डोंट नो, क्या है यू डोंट नो. अल्कोहल है हमें नहीं पता, फैमिली है हमें नहीं पता, बट देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम डीप रूटेड इशू. एंड वी डोंट नॉट एंकरेज कि भाई सोबर हो जाओ सब ठीक हो जाएगा. नो. एडिक्शन तभी रिकवर हो सकता है, तभी एक इंसान उससे ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकता है जब वो कनेक्ट करता है. कनेक्शन विद आवरसेल्फ या फिर कनेक्शन विद द फैमिली मेंबर. Moving forward, in the next slide, we'll be talking about the type of family members we have. Diksha, can you please change the next slide? Yeah. So as a family member or as a friend, we have different roles to play. हम हर कोई अपनी लाइफ में एक एक अलग अलग रोल प्ले कर रहा है हर फैमिली रिलेशनशिप में. So first question is, what role are you playing? आपका क्या रोल है? अगर घर में कोई एडिक्ट है तब, या फिर if you are the addict. If you are the addict, then you know what is your role. I always say कि in every situation, just know what energy are you putting in there. तुम क्या एनर्जी लेते हैं? अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी हुआ, what was your role? What energy did you put in? So the first is, if you are an addict. I know if you are an addict, if anyone here is an addict or was an addict or if knows someone who is an addict, we always believe कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, ये बंदा ही खराब, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है मुझमें कि मैं एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहा हूँ. हम अपने आप को भी बहुत सेल्फ सैबोटाज करते हैं, बहुत जज करते हैं, which is very normal to do. Please know if you are, if you have low self-esteem, if you keep criticizing yourself, it is normal. But if that overpowers you, it becomes a problem. So when we say person who is playing the role of an addict, और हम उससे ही मांगते हैं कि भाई वो समझ जाए, just know that is impossible. As I can, understand from my experience, if I show you my palm
आई एम प्रिटी श्योर यू वोंट बी एबल टू सी माई नेल्स नॉर माई नकल्स। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं देख रही हूँ वो गलत है या जो आप देख रहे हो वो गलत है। वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। So the person who is going through an addiction has a different perspective to family member का है. For them, addiction or the substance is their safe space. वो जब यूज कर रहे हैं, वो जब एडिक्शन में है, they feel safe, they feel comfortable, they feel कि हाँ ये मेरा जोन है, this is who I want to be, this is how I feel good. The first and very important thing that we need to keep in mind is when we are dealing with someone who is suffering from addiction, we need to just stop telling them कि छोड़ दो, वो नहीं होगा. You need to stop showing them or जो reward or punishment करके तो we need to stop doing that because from their perspective they can't see it. From their perspective, when they were alone, when they were lonely, when they were suffering, their solace was addiction. Their safe space was addiction. So उनके mind में notion है कि भाई addiction is a good thing, not a good thing, but it has helped me. And when someone has helped you from a very difficult time, you do have a soft corner for them. तो एक चीज ये होगी. सेकेंडली क्या होता है कि जब हम एडिक्शन में होते हैं ना, या किसी भी चीज के, हम फोन की बात कर लें, हम खाने की बात कर लें, हम शॉपिंग की बात कर लें, हम पोर्नोग्राफी की बात कर लें, हम सेक्स की बात कर लें, दीज आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिक्शन. तो हमारे ब्रेन में एक मशीन चल रही होती है कॉन्टिन्यूस, 24/7 चल रही है, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन, और दूसरा इंपॉर्टेंट सेरोटोनिन. अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये होते हैं हमारे मूड हार्मोन. ये हमारे बॉडी का, हमारे लाइफ का सारा मूड इन पर डिपेंड करता है. हमने डोपामिन हार्मोन तो बहुत सुना होगा. तो जब एडिक्शन में कोई इंसान गया है, दे माइट हैव बीन थ्रू अ रफ पैच. अब एकदम से रफ पैच में, या फिर मान लो कि आपने भाई 4 दिन से खाना नहीं खाया और एक दिन आपके आगे एकदम फैंसी मील रखी जाए, वोंट यू बी हैप्पी? और वही मील आपको रोज देते जाए, यू विल बी हैप्पी कि भाई ठीक है, रोज मेरे को मेरा फेवरेट खाना मिल रहा. Then one day someone adds dessert to it कि भाई लो साथ में मीठा भी खाओ. You'll be more happy कि भाई आज तो और अच्छा लग गया. Then next after a month someone adds कि भाई अच्छा अभी तक मेन कोर्स चल रहा था, स्टार्टर्स भी लो अपने फेवरेट. You'll be more happy. तो ऐसे ही एक एडिक्ट का ब्रेन काम करता है. जब वो फर्स्ट टाइम अल्कोहल लेते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं, their body feels good कि यार मजा आ रहा है. सेम वे हम खुश होते हैं अपनी फेवरेट मील देखते हैं जो 4 दिन से नहीं खाया होता. उन्होंने लाइफ में कभी वो हाई एक्सपीरियंस नहीं किया और उनके बॉडी, उनके ब्रेन को एकदम से चीज मिली, दे फील गुड किया फाइनली. एंड आफ्टर सम टाइम कोई उसमें डिजर्ट ऐड कर रहा है कि भाई अभी तक तो तुमने ये किया, अब इतना करके देखो, उनका ब्रेन और अच्छा फील करेगा. देन आफ्टर टाइम जब स्टार्टर्स भी ऐड हो जाएंगे और भी 2-3 चीजें ऐड हो जाएंगी, इट विल कीप गिविंग देम दैट हाई, दैट रश. सो दैट इज हाउ दे गेट डिपेंडेंट. अब इतना अच्छा फील करने से किसी को हम वापस नॉर्मल जोन में लेके जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. उनके ब्रेन को अब हैबिट हो चुकी है. उनके ब्रेन को ये भी नहीं पता किस चीज से हुई है. दे जस्ट नो कि भाई जो ले रहे थे वो लेते रहो, बिकॉज वी फील गुड, वी फील लाइट, वी फील रिलैक्स. हमें नींद अच्छी आ सकती है, हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है. एंड इट ऑल कम्स अप टू अ पॉइंट जहाँ पे हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं. जहाँ मैंने डोपामिन की बात करी ना, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन, उसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन. सेरोटोनिन को हम बोलते हैं मूड हार्मोन. ये सब हमारे मूड, हमारे हैप्पीनेस लेवल को फोकस करते हैं. अब ब्रेन में कोई चीज बार 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 जरूरत से ज्यादा बन रही है और नेचुरली नहीं बन रही, उसको आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है सब्सटेंस. एक पॉइंट पे आके तो वो खत्म हो जाएगी ना. तो जब वो खत्म हो जाती है तब हमारा ब्रेन बोलता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट. तब उस सिचुएशन में या तो इंसान नया सब्सटेंस ढूंढ लेता है जहाँ से उसे और हाई फील हो और रश फील हो, या फिर दे गो इन अ जोन दैट वी कॉल इट डिप्रेशन. As I work with patients, I see most of them are on a verge of getting depressed or are struggling with depression. And depression and addiction go hand in hand. क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हार्मोन इफेक्ट हो रहा है वो हैप्पीनेस हार्मोन है. कभी उन्हें लाइफ में थोड़े टाइम बाद वो पी भी रहे हैं, उन्हें नशा भी नहीं चल रहा है, एंड एवरीथिंग जस्ट फील्स सैड. भाई कुछ है ही नहीं. फैमिली फील सैड, बाहर आया, आउटिंग्स पे जाना, शादियों पे जाना, नहीं, मुझे बस पीना है. और वो पीते भी एक टाइम के बाद इसलिए बिकॉज दे आर फाइंडिंग दैट हाई कि यार बस एक ना किक मिलता है. सब्सटेंस भी इसलिए चेंज होता है. और जब हम उन्हें रिहैब में लेके आते हैं, वी सी देम स्ट्रगलिंग. इट्स नॉट देम स्ट्रगलिंग, इट्स देयर हार्मोन स्ट्रगलिंग, बिकॉज द ब्रेन वांट्स व्हाट इट वांट्स. द ब्रेन हैज दिस हैबिट ऑफ अडैप्टिंग टू चेंजेस. न्यूरोपैथी से बहुत सारी चीजें होती हैं
जो चेंज हो जाती है और ब्रेन को नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है। तो एक एडिक्ट को अगर हम बोलेंगे कि भाई तुम अपना देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे करो, हम कॉन्फ्रंट करेंगे, दे वोंट लिसन, दे वोंट अंडरस्टैंड। दे कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हेन दे रियलाइज। जब वो खुद से आएगा, जब खुद से इंसाइट में लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, या फिर ये तो मेरी लाइफ है, व्हाई एम आई डूइंग दिस। सेकेंडली, द अदर फैमिली मेंबर दैट इज कॉमनली नोन एज द इनेबलर। हम बोलेंगे कि भाई फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि मत करो, वो इनेबलर कैसे हो सकते हैं। फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मत करो, वो इनेबलर कैसे हो सकते हैं। The smallest thing that you do to save the addict means you are enabling them. Now, for example, a family member who is struggling with addiction, be it your son, be it your brother, be it your father, go forward. But if you know someone, हम उन्हें हर तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विल स्टे अप लेट कि अच्छा अब वो आ जाएंगे, अब वो आ जाएंगे, अब वो आ जाएंगे, और फिर हमें वो नहीं मिलते तो हम सड़क पर उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं कि कहाँ होंगे। Then we find them, someone कहीं कहीं लेटे हुए हैं या कहीं पुलिस स्टेशन में, and we bring them home and we let them sleep. And next day जब वो ऑफिस नहीं ज्वाइन कर पाते, we call their boss कि उसकी तबीयत खराब है, he's not keeping well, उसको फीवर हो गया, इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर पाएगा, या फिर आज उसको छुट्टी चाहिए, ये इमरजेंसी हो गई, वो हॉस्पिटल में। भी लाई टू सेव देम। हमारी इंटेंशन वहाँ पे सेविंग की है, बट व्हेन वी ट्राई टू सेव देम वी इनेबल देम। हमने एक रास्ता दिखा देते हैं कि ठीक है तुम डैमेज करो, हम पीछे से संभाल लेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो आफ्टर आफ्टर एंड आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, एट द एंड वी आर फैमिली, और हमें चाहिए कि हमारा फैमिली मेंबर सेफ है, चाहे वो कैसा भी हो। वी माइट फाइट विद देम, वी माइट बी वायलेंट, बट एट द एंड हमारी फैमिली है, तो वी ट्राई टू सेव देम। एंड व्हेन वी डू दैट वी बिकम द एनेबलर। द पर्सन नो कि भाई ठीक है मैं कितना ही कर्जा चढ़ा लूं, मेरे पापा उतार देंगे। Hi Ashita, sorry to interrupt. Can you be a little clear? Your voice is not audible that much. Is it fine now? No, not. Is it fine now? Yeah, right now. Yeah, okay. So we were talking about the enabler. We all have that enabler in our family. It's not about addiction. We always have a parent or a sibling or a relative who covers up for our, whenever we make a mess. In that moment, the addict is enabled कि भाई कुछ भी हो जाए बैकअप है, कुछ भी हो जाए पीछे संभल जाएगा, फैमिली संभल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, because they have someone who enables them unintentionally. That is truly unintentional, just to save them. Then moving on to next, the lost child. And when we talk about the lost child, इसके ना बहुत सारे डायनामिक्स आ जाते हैं। हमने देखा होगा कि फैमिलीज जिसमें पेरेंट एडिक्ट है या फिर कोई रोल मॉडल एडिक्ट है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी कैटेगरीज अलग होती हैं। या तो वो बहुत रिबेलियस होते हैं, दे फाइट फॉर देयर थिंग्स, बिकॉज ग्रोइंग अप दे हैव सीन कि भाई लड़ोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, लड़ने से बात मानी जाती है, चिल्लाने से बात मानी जाती है, मारने से बात मानी जाती है। Secondly, they become blind followers because they have always seen violence, fights, and alcoholism or any sort of addiction in their home. They feel कि that is not the right way, इसीलिए जो मुझे right दिख रहा है मैं सिर्फ उसके पीछे चलूं। These people are also the people who fall in the wrong relationship, who struggle with their relationship because throughout their life उनके लिए love का concept कुछ होता है। These are the people अगर उनको after marriage या फिर relationship balance मिल रहा है, they'll accept it because उनके लिए डेफिनेशन प्यार की है कि भाई पापा मारते तो थे बट प्यार भी तो करते हैं, तो शायद यही प्यार होता है। So they take what they get. Throughout their life, they struggle with changing the notion कि भाई मुझे इनके जैसे नहीं बनना, मुझे इनके जैसे struggle नहीं करना, but they end up being the same person that they thought they won't. Or if they are rebellious, they rebel in everything. And these people also they struggle in their relationship. They become so much rebellious that अगर इनको अच्छा भी बता रहे हो ना, इनके लिए वो चीज गलत है because it is coming from someone else. Hyper independence is also a response. We see children की or also adults जिनको सब काम खुद करना है. They can't just rely on anyone. They just can't trust anyone.
करना है, चाहे 10 घंटा लगे 20 घंटा लगे, खुद करना है और एकदम परफेक्ट चाहिए। स्ट्रगल भी कर रहे हैं तब भी हेल्प नहीं लेनी है, बिकॉज उनके लिए वो हेल्प का नोशन कभी रहा ही नहीं। दे हैव ऑलवेज सीन देयर फादर फिगर और पेरेंट जो उनको इग्नोर करते आए हैं। तो ग्रोइंग अप दे बिलीव कि भाई अपने आप को खुद संभालना है। दे बिकम हाइपर इंडिपेंडेंट। Even these kind of people, they struggle in their relationship because relationships require emotional intimacy. They fear opening up, and all these children, they have kept their emotions tagged in a box and shoved it under a table or a bed. वो कभी जब खुलता है तो they struggle with anxiety, with depression, and many other mental disorders. तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो एडिक्शन कर रहे हैं only they are suffering. It is more than that. Now moving on to the next, that is a mascot. Mascot क्या करता है कि they know there is a problem, they know they can't do anything about it. So they try to ignore it. By ignoring, I mean they'll try to put it in a humor कि भाई ये तो होता रहता है, वो तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, लाइफ चलती है. Deep down they are struggling. These are the people who struggle the most. These are the people who nor address their emotions अपने आप में, नहीं किसी और के आगे. वो अपने आप से भी जिस चीज में स्ट्रगल कर रहा है, अब जो लॉस्ट चाइल्ड है वो स्ट्रगल कर रहा है और उसके बिहेवियर में दिख रहा है भाई समथिंग इज अप, समथिंग इज रॉन्ग. बट विद द mascots they'll try to put everything in humor कि भाई सब ठीक है, होता रहता है ये तो. they'll try to laugh about it, even about their own suffering. हम ऐसे लोगों से कभी मिलते होंगे ना कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं बट वो खुद को यार मेरे साथ ऐसे होता रहता है, मैं तो पागल हूँ, मेरे साथ ही रखा है. मतलब they try to make fun of it and make the situation light. Now the intention here is one, to save themselves from those hard feelings, from that harsh experience. Second, to make the situation light because they see others struggling as well. You see their mother struggling, father struggling, or grandparents struggling, or siblings struggling. So they believe कि अब मैं इसके बारे में कुछ कर तो पा नहीं रहा हूँ. Let's make it light. Now the next and the very important part that a family member should play, but most of the time it is very hard for them to play the part. That is the role of a hero. When I talk about hero, ऐसे नहीं कि भाई आए और लेके चलेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे स्लाइड. द हीरो इज समवन जो एक हार्श डिसीजन ले पाता है. द डिसीजन ऑफ सेंडिंग देम इनटू ट्रीटमेंट, द डिसीजन ऑफ सेंडिंग देम इनटू रिहैब एंड स्टेइंग एट इट. बहुत सारे पेरेंट्स को हम ऐसे देखते हैं जो हमें लगता है कि उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वांटिंग टू हेल्प देयर लव्ड वन. बट देन हम अगेन देखते हैं कि 2 महीने बाद दे टेकिंग देम होम, 1 महीने बाद दे टेकिंग देम होम. दे आर मेकिंग श्योर कि उनको सारी फैसिलिटीज मिले, दे आर फाइन और नॉट, बात करा दो, वीडियो कॉल करा दो, यू आर कमिंग टू मीट देम. These are the people I call enablers. The hero is one who understands the treatment and who tries to just stay with it, follow it, understand कि अच्छा इतने टाइम का ट्रीटमेंट है तो वो क्यों है. इन माई एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है जहाँ पे फैमिली मेंबर्स इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं. दे स्टे इन टच विद अस बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ट्रीटमेंट अपनी जगह है. दीज आर द पीपल जो जल्दी रिकवर करते हैं, जो जल्दी रियलाइज करते हैं. जो पेरेंट्स आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, बार बार टच में रहना है, बार बार उनकी नीड्स का ध्यान रखना है, वो वहाँ पे भी इनेबल टेलिंग देम कि ठीक है तुम वहाँ पर ट्रीटमेंट लो, हम पीछे से ध्यान रखते हैं, तुम्हें वहाँ कमी नहीं होगी. और ब्रेन को वही मैसेज जाता है कि क्या पीछे हो तो रहा है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ. प्लीज अंडरस्टैंड कि उनको उस सब्सटेंस की जरूरत नहीं है, उनको उस हाई उस रश की जरूरत है. दे आर लुकिंग फॉर दैट फीलिंग. वो फीलिंग किसी भी चीज से आए, दे जस्ट लुकिंग फॉर दैट. तो जब वो फीलिंग एक बंद स्पेस में उन्हें मिलती है रिहैब में, जहाँ पे उनको मिल रहा है कि ठीक है सब कुछ तो आ रहा है, काम भी नहीं करना पड़ रहा, खाना भी टाइम पे मिल रहा है और जो मांग रहा हूँ वो आ रहा है, दे गेट दैट फीलिंग कि ठीक है सेम चल रही है, सोने को भी मिल रहा है. एंड बाहर भी वो अगर यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो उस कंफर्ट स्पेस के लिए कर रहे हैं, वो सेफ स्पेस के लिए, सेफ जोन के लिए कर रहे हैं जिसको वो क्रिएट कर रहे थे. अगर किसी के ब्रेन में बहुत सारी चीजें चल रही है, एकदम कुछ 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 चल रहा है, वो एकदम से रिलैक्स हो जाए, डोंट यू थिंक दैट पर्सन वुड वांट दैट. हमारे साथ भी अगर ऐसा हो, हमें पता चले कि भाई इस चीज से मुझे हमेशा अच्छा लगता है, हम रोज वो चीज करेंगे.
कि भाई इतना वो हो रहा था और अब एकदम से ठीक हो गया. इवन विद मेडिसिन, अगर हमने दिमाग में चीज मान लिया कि भाई मेरी इस तबीयत में दिस मेडिसिन हेल्प मी, हम उस मेडिसिन को ही बार बार लेंगे. वी रिमेंबर द नेम, भाई वो दवाई दे दो बस. बिकॉज दैट मेडिसिन हैज हेल्प अस. फॉर एन एडिक्ट, their substance is their medicine. Moving on to the next slide, we'll talk about. Diksha, can you move on to the next slide? Masiha complex. Now, Masiha complex is savior syndrome, Christ syndrome. हमने काफी लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा, काफी लोगों ने नहीं भी सुना होगा. Okay, so when I talk about Masiha complex, ये ऐसा नहीं है कि वो भगवान के फरिश्ते हैं या फिर हम भगवान के फरिश्ते हैं. It is a state of mind कि भाई I am, destined to become a savior. मैं ही इनका savior बनूंगा, मैं बचा लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा. Most of the times we see mothers having this syndrome. This so research के भी हिसाब से जितने भी females हैं, maximum females में ये मसीहा complex मिला है, to help others, to be there for others, to put their needs on hold and help others. हम सुपर हीरो से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो अपनी पर्सनल लाइफ छोड़े और पहले हमें बचाने हैं. टॉकिंग अबाउट मूवीज, ऑफ कोर्स नॉट रियल लाइफ. हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई वो स्पाइडरमैन है तो क्या हुआ, वो अपना वो छोड़ के, अपना रिलेशनशिप छोड़ के पहले अपनी उनको बचाएगा, चाहे अपना कितना ही लॉस हो. स्पाइडरमैन पार्ट 2 में हुआ था ऐसा, है ना, that he had to suffer from his own loss to save the world, to save someone else, because it was expected out of him. So when we talk about Masiha complex, most of the women, most of the mothers, they suffer from this, which is not wrong. Every mother has a soft space for their child, willing to do anything for their child. But when it becomes Masiha complex, it becomes problematic. Especially when we talk about addiction. The mother can see कि भाई the बच्चा is suffering, that they need treatment, कि और कोई इलाज नहीं. Still, कि मेरे साथ रहेगा तो ठीक कर लेगा, मेरी बात सुनता है, मैं संभाल लूंगी, उसे मुझसे ज्यादा अटैचमेंट. They try to save them, कि भाई I have that superpower. They might or they might not, but that is a state of mind which forces them to do things that does more damage than good. Most of the times when we see new admissions coming, uh, we see mothers playing a major role, crying, holding them back, stopping them. Sometimes they send them there and वापस बुला लेते हैं कि भाई मेरा दिल नहीं लग रहा, I am feeling very anxious. We understand as a mother, it is very normal to feel that. It is very difficult to send your loved one to a space like that. But after a while, we see them, calling us back कि हमसे नहीं हो रहा, अब ले जाओ. And then again, in the loop, कि भाई मेरे को याद आ रही है, मेरा बेटा कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है. They are doing out of love. They are doing because there is a state of mind that tells them कि तुम बचा सकते हो, you have that superpower. But they need to understand that this is a complex, it is a problem. It is a state of mind and not a superpower that you can ऐसे कि और हो गया. So if you know someone who is a mother of an addict, or if you are one of them, please know that your love, your concern for them is valid. It is very pure. It is very, out of heart. But when we talk about addiction, addicts का brain नहीं allow कर रहा है उन्हें वो समझने के लिए. Even they are suffering, and you are suffering too. You see them struggling, you see them suffering, and you take that pain. When you send them away, you're still in the pain. You need to understand that you and your loved one are two different individuals. You both have two different lives. You are not supposed to be a masiha for anyone. And it starts very small, we see. When we are a child, we are expected, we girls are put up to this pedestal कि भाई ये मेरी अच्छी बेटी है, ये सब करेगी, ये समझेगी, ये समझाएगी, ये compromise करेगी. And when a woman grows up, she grows up with the same mindset. It's very difficult for any mother in this whole world to come out of that conflict. I'm not saying that men or male category doesn't suffer from this. They do. But as per the research, females suffer from it more. Even if you're a male or a female, just know that your identity is completely different from your loved one. This is not who you are meant to be. You are a human, not a masiha. You can only be a masiha when you take that hard step to help them.
Moving on to the next slide. Diksha, can you change the slide? Now, when I say, helping a loved one dealing with addiction, how do we do that? अब हमने बात कर ली कि ऐसे नहीं बनना है, वैसे नहीं बनना है, इनेबलर नहीं बनना है, सेवियर नहीं बनना है, बट करना क्या है फिर? क्योंकि जब भी हम एक एडिक्शन सफर करने वाले इंसान से बात करते हैं, तो दे कम्प्लीटली शट डाउन, विच इज ट्रू। यहाँ हमारा ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और ब्रेन के इसी पास से सारी इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है और ये एज के साथ डेवलप होता रहता है। बट अगर बहुत अर्ली एज में हमने सब्सटेंस यूज किया है तो दिस पार्ट वोंट डेवलप। हम कितनी बार ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। हम 10 बार बात कर रहे हैं, 10 बार समझा रहे हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग सेंस ऑफ इट। तो इसलिए क्योंकि ये पार्ट डेवलप ही नहीं हुआ। तो जब भी हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो एडिक्शन से सफर कर रहा है, हमें पहली चीज ध्यान रखनी है कि हमने नो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हम जितना नो बोलेंगे वो उतना उसे यस मानेगा, बिकॉज दे हैव अ चाइल्ड लाइक माइंड। यहाँ पे हमेशा कर्टेन करता है, दे ऑलवेज परसीव एवरीवन एज अ थ्रेट। ऐसा हमारे साथ भी होता है। लेट्स गो बैक टू आवर स्कूल डेज। जब हम स्कूल में होते थे और हम पे टीचर चिल्लाती थी, इमिडिएटली हमारा एक रिस्पॉन्स होता था रोना या फिर डर जाना। टीचर ने क्या बोला वो तो अंदर गया ही नहीं, बिकॉज मैस्लोज की नीड हायरार्की ना बिजनेस स्टडीज में मैंने पढ़ी थी, बट ये साइकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो बोलता है मैस्लो कि हमारी ना एक इंडिविजुअल की बहुत सारी नीड्स होती है, एक पिरामिड में नीड्स होती है और वो नीड्स मीट होना बहुत जरूरी है। तो जब पहली नीड होती है कि भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, कि मुझे कपड़ा, घर, मकान, ये सब चाहिए, बेसिक नीड। फिर उसके बाद आती है सेफ्टी नीड। जब हम सेफ्टी नीड की बात करते हैं ना, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी वो नीड कभी मीट ही नहीं हुई होती, बी इट एनी रीजन। वो रीजन ये भी हो सकता है कि स्कूल में उन्हें इस तरह से ट्रीट किया गया। ट्रस्ट में जितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी फैमिली हमारी लाइफ में करती है, हमारा स्कूलिंग, हमारी टीचर्स भी करती है। मोस्ट ऑफ पीपल हु आर शेप टुडे इन अ वे, जो डरते हैं या फिर नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, वो इसलिए बिकॉज दे ग्रोन अप अंडरस्टैंडिंग कि भाई आई एम गुड फॉर नथिंग। ओके यार, गेट बंद कर दो और लीव हो गई मीटिंग। तेरे ही मैसेज आ रहे थे, मैंने बोल किया उस दिन तुम लीव हो गई। चलिए जा ब्रो, मेरे को तो 20-25 मिनट और लगेंगे। Yeah, I'm so sorry. So I was saying that when we talk about talking to a loved one about it, there are so many things that we need to keep in mind. जब हम स्कूल में भी होते हैं और हमारी सेफ्टी नीड ही मीट नहीं होती, इसीलिए भी क्योंकि हमें किसी ने डांट दी, इसीलिए भी क्योंकि हमें किसी ने गुड फॉर नथिंग बोल दिया। व्हेन आप दैट नीड इज नॉट मेट, हम वहीं पे रुक जाते हैं। उस पूरी हायरार्की का फंडा यही है कि जब तक आप ऊपर एक नीड मीट नहीं करोगे, आप नेक्स्ट नीड पे नहीं सकते हो। अगर आपकी सेफ्टी नीड नहीं मीट हुई है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव ऑन टू द नीड ऑफ सोशल गैदरिंग, सोशल रिलेशनशिप। फिर उसके बाद की जो नीड्स बहुत दूर है हमारे लिए। तो जब तक ये जो लोग होते हैं, इनकी सेफ्टी नीड्स कहीं ना कहीं जाके रुक जाती हैं, मीट नहीं होती हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज डिफरेंट नीड्स। हमारे लिए सेफ्टी नीड्स है कि भाई हमारे पास फ्रेंड्स हो और एक घर हो। किसी और की सेफ्टी नीड कुछ और भी हो सकती है। वो ये भी हो सकती है कि मेरे साथ मेरा एक पेरेंट नहीं है। We see a lot of people who do not have their parents. तो जब वो पेरेंट नहीं होता है, उनकी एक सेफ्टी नीड दिमाग में रहती है कि यार आई एम अलोन, आई एम नॉट सेफ, द वर्ल्ड इज अ बैड प्लेस। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम उन्हें लेक्चर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, वो अंदर नहीं जा रहा। तो वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। नो वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए when we are trying to explain them. It should be more like, okay, how can I help you? How do you feel about it? What do you want? How will you feel if you will
stop using it. No के अलावा ना बहुत सारे words होते हैं जो stop हो गया. When you stop using it, how will you feel about it? Do you think this will help you in long run? These are the questions we can ask. जहाँ पे हम instruct नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ instruct करेंगे our brain will shut down. When you are helping a loved one, remember addiction is treatable. First and very important thing, addiction is not a moral failure. वो कोई character flaw नहीं है, वो moral failure नहीं है. You must have raised your kid to be the best person. और अगर तभी वो कभी एडिक्शन में जाते हैं तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट अबाउट योर मोरल्स और वैल्यूज. एडिक्शन किसी को भी हो सकता है. टुडे आई एम टॉकिंग हियर, हो सकता है कि आपसे 10 साल बाद मैं भी किसी रिहैब में अपनी ट्रीटमेंट के लिए. इट इज दैट कॉमन. एनीवन एंड एवरीवन इज प्रोन टू एडिक्शन. सम पीपल आर मोर प्रोन बिकॉज उनकी ब्रेन केमिस्ट्री उस तरह से, मे बी उनका एक्सपीरियंस उस तरह से रहा है, मे बी उनका एनवायरमेंट उस तरह से रहा है. नेचर एंड नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So remember, addiction is treatable. अभी पता नहीं है कैसे है, but trust me, it is treatable. And whenever you are helping someone who treatable है, keep this in mind. Every disease is treatable. If not treatable, it is managed. Just like diabetes. Diabetes lifetime रहती है ना हमारे साथ. वो treat नहीं होती, but वो manage हो जाती है. Now, second is seek support. When we are so much invested on helping someone, or if we belong to a family जो dysfunctional है due to addiction, we need support ourselves. Most of the time, we see people who are struggling with their own mental health, with their own routine, with their own sleep. It is majorly because they lack that support. उन्हें सुनने वाला कौन है? Okay, so if you know, or if you are someone who knows someone struggling, just know that support is important. Visit a therapist, see a therapist, talk to a family member who would understand. Just seek support, because जब तक हम सपोर्ट नहीं लेंगे हम अपनी एक जोन में नहीं है हेल्प करने वाले. वी कांट हेल्प एनीवन अंटिल अनलेस वी डू नॉट हेल्प आवरसेल्फ. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो देन अगेन वी आर इन दैट मसीहा कॉम्प्लेक्स फॉर्म. Okay, moving on to the next is talk to your loved one. Of course, that is covered. Now, when I talk about loved one is to talk about yourself. The other is talk about the addiction with the addict. Loved one here is the addict who is suffering. Talk to them. Wait for them into be a state where they can talk. हो सकता है वो impossible हो state आना. But एक time ऐसे भी आता है when they are most vulnerable, when they wish to be heard. Most of the times when you talk to them, कि पहली बार उन्हें कोई सुन रहा है लाइफ में, उनका वो रिएक्शन होता है. They cry, they went out, they open up. Be it for once. Let them do it with you. Be their safe space. Show compassion. By compassion, I mean ऐसा नहीं है कि उनके लिए सब करना है, हमें ये भी करते हैं, वो भी करते हैं. Compassion is telling them I'm here. Whenever you want to talk to me, whenever you want to open up, I'm here. Understanding that, again, they are not a problem, they have a problem. So be, available and make the space for them. कि अगर उनको कभी लगता है that they want to quit, they can trust you with this decision. अगर उनको लग रहा है वो नहीं quit कर पा रहे, they can trust you with the decision. Educate yourself and be open. When I say educate yourself, trust me, बाहर इतने सारे लोग हैं, including me. हमारे दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं एडिक्शन को लेके, रिकवरी को लेके, रिहैब को लेके. You need to educate yourself, because जब तक वो हमें अवेयरनेस नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता. Growing up, as I told you, मेरे दिमाग में बहुत सारे मिथ्स थे कि एडिक्शन ऐसा होता है, लोग ऐसे होते हैं. It changed when I was made aware. When I started educating myself कि what is more to it. अच्छा ठीक है, मान लिया गलत काम कर रहे हैं, मान लिया चोरी कर रहे हैं, मान लिया बट क्यों? ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ? ऐसा तो नहीं होता ना कोई भी इंसान एक दिन उठेगा और बोलेगा कि भाई मुझे कल से एडिक्ट बनना है, कि कल से मैं चोरी करना शुरू करूंगा. It is their experience, it is their understanding of their environment that shapes them that way. If not addicts, I'll talk about criminals as well. Nobody just wakes up one day कि भाई मुझे criminal बनना है. They become that way because of their experience, because they've seen and they've learned कि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा. Accept that it is a problem, there is a problem.
and your loved one is suffering from it. Most of the times, we as families fail to acknowledge कि कुछ तो problem. We try to overcover it or overshadow it कि भाई कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही करता है, कभी कभी इसका हो जाता है, वरना he's a very nice man, very nice man. He is a nice man, no problem. The person is a very nice human being, but need to accept that they are suffering and they need help. When as a family you understand that, things change. Disha, can you please present the screen again? Diksha, can you please present the screen again? There must be some glitch. Give me a minute. Please. Can we please move to the next slide? Yeah. So now we'll talk about types of parenting. And trust me, this is not just about a person who's suffering from addiction. This is about everyone. Our parents, our childhood, and how what kind of parents we might grow up and become. So types of parenting by it's a very simple concept that we use in psychology to understand family dynamics. हमें दिखता है कि parents have done everything and they were always been there, उन्होंने सब techniques सिखा दी, but उनका pattern क्या था, उनका type क्या था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा effect पड़ता है कि as a person when we grow up, as an individual when we grow up, where we lead in our life. When we talk about parenting, the very first is authoritative. Type A parenting, we call it. So authoritative parenting में, these are the parents, who are perfect themselves and they want the child to be perfect too. So they set very clear expectations, define rules, and are supportive. If I am, excelling in my life and doing something very good, I would definitely, expect कि मेरा बच्चा भी वैसे ही करे. So वो करने के लिए, I'll put a very clear expectation कि this is what I expect. I'll define rules कि ये चीजें होनी चाहिए, and I will be supportive about it. But now, if I'm an authoritarian parent, I will have high expectations, the same expectations जो एक authoritative parents की होंगी. My focus would not be, to put rules and let them follow it. I'll focus on discipline. कि discipline होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. And at the same time, I'm not supportive. If my child is late, कि भाई 8 बजे deadline है and they come home by 8:30, वहाँ पे मेरा reaction as a parent ये नहीं होगा कि अच्छा why were you late. वहाँ पे मेरा reaction या तो punishment होगा या judgment होगा. Because you are careless. Because you don't respect me. Because you're a bad person, तुम्हें गंदे बच्चे हो इसलिए तुम लेट आए हो, तुम सुनते नहीं हो. तो नाउ अगर हम फर्स्ट दो कैटेगरी से कंपेयर करें, एक पेरेंट जो उस चीज के बारे में सपोर्टिव, जिसका बच्चा 8 बजे के बाद आया और उन्होंने बोला कि इट्स ओके, समटाइम्स यू गेट लेट एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट लेट जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज.
तो वो एक पेरेंटिंग हो गई, एक अनसपोर्टिव हो गई कि भाई तुम लेट हो क्योंकि तुम केयरलेस हो, तो क्योंकि तुम रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि तुम गंदे हो. नाउ एज अ चाइल्ड, व्हाट अ चाइल्ड वुड थिंक जब उसे ब्लेम दिया जाएगा, they'll absorb that information because I'm not a good child. They'll turn up to be an adult with the same belief. These are the children, who end up being people pleasers, because from family they have always, seen criticism or uh, strictness. So when they grow up, they know कि भाई अगर मुझे safe रहना है, अगर मुझे चाहिए कि that people keep loving me, I should grow up to be an individual जो उनके हिसाब से चलता है. Whereas children of authoritative parents, they are more self-reliant. They understand themselves. They are more inclined and in touch with their emotions. Now, talking about permissive parents, they have very low expectations. कि ठीक है, करो ना करो, कुछ मत करो, but responsibilities बहुत सारी है. तुम्हें नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, पर घर का ध्यान तुम्हें ही रखना है. तो उस टाइम पे बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे से मतलब इतनी सारी जिम्मेदारी है, पर मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा. हाउ डू आई डू इट? जब हम पैम्पर्स की बात करते हैं ना, इसी उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं इसी कैटेगरी में कि भाई पेरेंट्स ने इतना पैम्पर किया कि ठीक है, मत भी करो, नहीं भी करोगे चलेगा, ऐसे भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, जो चाहिए मिल जाएगा. बट व्हेन इट कम्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी की पढ़ाई भी कर लो, कुछ बन भी जाओ, कुछ बड़े बन जाओ, पैसे भी ज्यादा कमा लो, रिस्पेक्ट भी ज्यादा कमा लो, तो यहाँ भाई एक्सपेक्टेशन कि भाई लो एक्सपेक्टेशन की कुछ नहीं भी करेगा तो चलेगा, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठाए वो. शादी कर लो, और कितनी केसेस में ऐसे होता है लोग शादी कर लेते हैं और इन लॉज केयर कर रहे होते हैं वाइफ की, because the child growing up never had any expectations कि किसी रिलेशनशिप में मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है या मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. उनसे बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिमांड की जाती है. ग्रोइंग अप उनको नहीं पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे फुलफिल करनी है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया कि फुलफिल करें वो. तो बहुत कंफ्यूजिंग एक रिलेशनशिप रहता है, क्योंकि पेरेंट्स वहाँ पे उनका इंटेंशन गलत नहीं है. दे वांट बेस्ट, दे वांट किया बस ठीक है बच्चा पलता है. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ना कि पली जाते हैं बच्चे तो अपने आप हो जाते हैं. इट इज बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया बट उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी दी जाती है. अब एक बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो केयरफुल रहे, वो फाइनेंशियल समझे, वो थोड़ा मतलब समझ के चले कि हाउ लाइफ गोज. एंड व्हेन द पर्सन ग्रोज अप, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है पूरा घर, पूरी फैक्ट्री, पूरा बिजनेस संभालने की. कैसे? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेरेंटिंग. फिटनेस भी इसमें बहुत रोल रखती है, वो भी तब व्हेन जब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती. एक्सपेक्टेशन के टाइम पे विद वेरी लीनियंट कि नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, पास तो हो ही रहा है, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ लगा देता हूँ. व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर एंग्री कि हमने तो बचपन से सब दिया और इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया. वी सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डूइंग दिस. लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज uninvolved. There are so many, patients that I have met जिनका response है that my parents have never loved me. They were not there for me when I was, performing on stage. They never heard me. उन्होंने कभी सुना नहीं, उन्होंने बस बोला ही है मुझे. And I myself have seen parents like this, not much, but some, yes. No boundaries and little support. They are very, enmeshed parents. यहाँ पे parenting का बहुत enmeshed होता है कि एक ही रूम में रहना है, फोन भी चेक करना है, फोन भी दिखाओ, अपने फ्रेंड से मिलाओ, फ्रेंड्स को मतलब अगर आप लेट भी हो तो योर पेरेंट्स वुड फर्स्ट कॉल योर फ्रेंड टू कंफर्म, बिकॉज दे हैव दैट एक्सेस. दे नो देयर फ्रेंड, they know that you are their friend and they'll know where you will be. There is no boundaries. As a human, as an individual, we expect boundaries कि भाई this is my space, इसमें मत आना please. This is who I am, ये मत करना please. But parents के इसमें ऐसे नहीं होता. This is also a kind of parenting style. Diksha, can you move on to the next slide? Yeah. जब हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात कर चुके हैं ना, द थिंग इज कि सारे पेरेंटिंग स्टाइल में सिर्फ एक ही स्टाइल ऐसा होता है जो कॉम्बिनेशन में रहता है. थिकनेस भी है, लीनियंस भी है, बाउंड्रीज नहीं भी है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट भी है, और एक टाइम पे पनिशमेंट भी है. इट इज आफ्टर दैट an individual grows up.
बट जहाँ भी एक दूसरा वो ज्यादा रहेगा, there are chances that a person will fall into a trap of addiction. If not trap of addiction, then some other dependency. वो ये भी हो सकता है कि पूरे दिन उठा के पबजी चलाना. Now, throughout the presentation, I was talking about how rehab plays a role, how we do it, जब admission होता है तो how a family responds and how they should. So, एक pattern वो था. Moving on to the next pattern, that is what does the family therapy do? एक family therapy नाम की चीज होती है जो बहुत कॉमन भी है पर बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज भी है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे आर अफ्रेड कि भाई हमने क्या गलत है, प्रॉब्लम तो उसमें है, हम क्यों करें. गवर्नमेंट ने तो इसके लिए प्री प्लान भी बनाए थे, बट इनहिबिशन स्टिग्मा ऐसा है दैट वी एंड अप कीपिंग आवरसेल्व्स, होल्डिंग आवरसेल्व्स बैक कि हम क्यों करें वो चीज. So if you are someone or a family of someone who is struggling with addiction, therapy family is very important because there is so many emotions that a person has hold it back. बहुत सारी चीजें उसने रोक ली हैं पीछे. अगर वो बाहर आएगा तो वो चीजें अल्कोहल या फिर किसी सब्सटेंस के थ्रू ही निकलेगी. I'm using alcohol because that's the most commonly used and accepted substance. फैमिली भी अलाउ करती हैं, पीते भी हैं, इट्स वेरी नॉर्मल कि हाँ ये तो करेंगे ही, ये तो हर जगह मिलेगा ही. I'm using that because it is very, very easily available. So when your loved one is in rehab, make sure you do family therapy, you practice that. Weekly visits with psychologists, if not the one your loved one is taking therapy from, somewhere outside. Everyone needs to sit together and understand what the problem is. Conflict आ कहाँ रहा है. और उस टाइम पे ना बहुत सारी चीजें ये निकल के आती हैं जो लोगों ने गलत एक मन में वो कर रखा होता है कि यार ऐसे ही होगा, मुझसे प्यार करते ही नहीं है, उन्होंने बड़े होकर मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, वो मुझसे नफरत ही करते हैं, फिर वो मुझे मतलब अगर यहाँ छोड़ गए तो दे डोंट वांट मी एनी मोर. आई हैव सीन पेशेंट्स कमिंग टू मी एंड सेइंग कि मैम हमें अपने आप को इमेंसिपेट करना है, मुझे अपने पेरेंट्स का लोगों ने, हाउ डू आई डू इट. पेरेंट्स आर ट्राइंग टू हेल्प देम बट दे वांट इमेंसिपेशन बिकॉज क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं. When we practice family therapy, we make sure that we talk about problems that are associated with substance abuse. टॉकिंग की भाई कैसे क्या क्या स्ट्रगल हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, इन अ सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे सेफ्टी हो, जहाँ पे फिजिकल वायलेंस ना हो सके, इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. नेक्स्ट मूविंग टू हाउ द रिलेशनशिप हैज चेंज, कि कैसे एक रिलेशनशिप चेंज हुआ है. बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं ना कि एक दिन हमें लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट लाइफ आई हैव, within a year we see कि यार this person is struggling with addiction, my partner is struggling with addiction, what do I do. He was not the same person. बहुत सारी फैमिलीज ऐसे बोलती है कि भाई ये शादी से पहले तो ऐसे थे, ये पीने से पहले तो ऐसे हैं ही नहीं, ये बिना अल्कोहल के तो बहुत अच्छे इंसान है. दैट इज ट्रू. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उससे क्या चेंज हो रहा है. सिट एंड फिक्स अ गोल फॉर फ्यूचर. जब तक थेरेपी में गोल नहीं होगा ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं नहीं पता. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू फिक्स अ गोल कि अच्छा व्हाट डू यू वांट and then how do we go there, plan it. Now talk about family से related जो भी टॉपिक्स है, सिर्फ एडिक्शन नहीं, जो भी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, इट कैन बी एनीथिंग. फैमिली में अगर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, टॉक अबाउट दैट. फैमिली में अगर प्रॉब्लम है किसी के बिहेवियर को लेकर, टॉक अबाउट दैट. सेफ्टी नीड मेट नहीं हो रही है, कुछ भी है, जस्ट टॉक अबाउट दैट इन दैट पर्टिकुलर फैमिली थेरेपी सेशन. इसके लिए एक अलग से सेशन डिजाइन होता है वेयर वी टॉक अबाउट एवरी अदर प्रॉब्लम दैट कम्स टू आवर माइंड and any discussion that is appropriate to the situation. This is how family therapy works. When you're in a family therapy, you need to hold back and understand that you are not taking sides with anyone, but just opening up, telling someone how you feel. And one thing families should keep in mind while practicing family therapy is there should be no judgment and no inhibition. If anyone has any question about it, please go ahead and ask. Are there any questions?
you know anyone struggling, or if you are someone struggling, please contact us. I think we'll be able to hear your story and help you. Also, if you have any questions later, you can, send these questions on our email ID or on our WhatsApp phone number, and we'll get back to you. I hope I was able to cover all the aspects. Thank you for joining in. Have a good day. Thank you, Yashita. Thank you, Deepika. Thank you for being the good host. Thank you. Thank you. This meeting is being recorded.